Good morning, my dear respected students, and welcome you all after your holidays. And hopefully, you having a same curiosity there in your minds and regarding the computer subject, and you are doing well in computers. So, my dear respected students, as on screen, I think so. The content is visible, and today, first of all, I'll just begin with the syllabus of periodic test 2, which we can also to be called as a half yearly syllabus. We can also call this particular as a half yearly syllabus here. So kindly concentrate, my dear respected students, and here it is the chapter. These three chapters will be there. That is advanced feature of MS Excel, introducing publisher and graphics in publisher, and this will be the marks distribution. But as now the time is uncertain, so if any kind of change is required in that particular marks distribution, the same will be intimated to you as well. आप लोगों को भी वो बता दिया जाएगा. Each and everything is going to be discussed with you all. So hopefully the screen is visible and you have seen the syllabus of computer for periodic test 2. And remember one very important thing here, that the syllabus of periodic test 1 is included in periodic test 2, which is to be considered as your half yearly examination. यहाँ तक जितने मेरे बच्चों को बात मेरी क्लियर है, वो yes no जो भी है वो टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में. वेरी गुड. फिर मस्ती शुरू करते हैं. वेरी गुड. अरे वाह, मेरे पुराने साथी आ गए, तनवीर, ये वो. अब नाम नहीं लूंगा, फिर कहीं गुस्सा कर लेते हैं कि सर आप उसका ही नाम लेते रहते हो, हमारा तो लेते नहीं हो. तो मैं इसलिए नेम नहीं बोल रहा किसी का भी. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर योर काइंड cooperation, and you all are replying in the chat box. So my dear respected students, kindly consider today we are just begin with a chapter number 3, and here it is. The name of that chapter is Advanced Features of Excel 2013. मेरे बच्चों, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए और अपने ध्यान को अपनी बुक्स पे या फिर अपने सिस्टम या डिवाइस पे एकाग्रचित करने की कृपालता करें कि जो आपके अध्यापक द्वारा whatever the thing is being discussed by your teacher is supposed to be directly goes in your brain in place of somewhere else. आपके मस्तिष्क तक चली जाए इधर उधर जाने की बजाय. तो कृपया करके देखिएगा प्लीज. I'm just begin with first topic here, which is there on your book, that is on page number 35. My dear respected students, the topic is autofill. What it makes sense? I'm just going to elaborate this thing, that auto representing automatic. I think so. This is to be considered as a automatic, and fill means the thing which is supposed to be filled automatically, that is to be considered as a auto fill. That is to be considered as a autofill. Very good, great. So now what we are going to do here, kindly consider, I'm just going to elaborate this definition here. The autofill feature of Excel allows you to fill a range of cells. Range of cells means the group of cells with a series of data without actually typing it. It makes sense that they are just going to reduce the burden of user. That, for example, if you want to type something, in spite of typing that particular content, what you are going to do, you are just going to drag and drop. You can simply automatically fill that particular series. And these are the two predefined series. Kindly concentrate, my dear respected students. They are saying that this is to be considered as a two predefined series. Sir, can you please elaborate the number one? Yes, that is month of the year. कोई मुझे month of year कोई भी मुझे chat box में type करके बताना कौन सा month of year आप बता रहे हैं. अभी कौन सा month of year चल रहा है? Very good. In a chat box. I am waiting. अरे वाह, क्या बात है. और फ्लड आ गया चैट बॉक्स में, दैट इज जुलाई. वेरी गुड. अच्छा, एक और चीज पूछता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. प्लीज देखिएगा जरा, एक बार देखिएगा कृपया करके. वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू ऑल, दैट दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज नेक्स्ट थिंग. इट सेज डेज ऑफ द वीक. कैन यू प्लीज मेंशन द डे? कैन यू प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द डे प्लीज इन अ चैट बॉक्स, इफ माय हम्बल रिक्वेस्ट.
अरे वाह today is a Saturday. Great participation. Thank you very much. God bless you all. So what we can do that if we are supposed to type the month, name of the months of year and days of weeks in Excel. So for the same, for the practical demonstration, I'm just going to opening an Excel sheet there. I'm just going to open Excel, and as my students are saying that now what happened, July is going on. I'm just going to type here July, and July, August, September, October. I just don't want to type these information. So what we can do, please kindly concentrate. I have just typed July once and moving the pointer towards the corner edge. And now I think so the pointer will be converted into a black plus symbol. And I'm just going to hold down the left button. And what I'm just going to do here is I'm just going to start dragging, and automatically the name of months is going to be appeared on your screen. आपकी स्क्रीन पे जो है वो ऑटोमेटिकली नजर आ रहे हैं. मेरे बच्चों को जिनको नजर आ रहे हैं वो यस या नो में टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर. वेरी गुड ग्रेट. हरमनप्रीत का बर्थडे आ रहा है जुलाई में. अच्छा ओके, थैंक यू हरमन. ओके वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. अच्छा अब एक और चीज बताता हूँ. अब मैंने यहाँ पे लिखा JUN. मैंने जून के लिए एब्रीवेशन लिख दिया. एब्रीवेशन मींस the shorter way to write that particular. Again what we can do, move the pointer towards the corner edge, bottom corner edge of that particular cell, hold down the left button and still hold down and start dragging that particular, and automatically the name of months is supposed to be displayed on the screen. मेरे बच्चों वो स्क्रीन पे आपको नजर आने शुरू हो गए. मेरे बच्चों को ये भी जो बात समझ आ गई हो तो यस नो में आंसर दे दीजिए थ्रू चैट बॉक्स. वेरी गुड. अरे वाह क्या बात है. वेरी गुड. ये सिर्फ यहाँ पे यस देने का मतलब ये है कि यस सर द थिंग्स विल बी क्लियर, ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन. बट actual thing is when you are supposed to do this practical on your systems as well, and just going to give your teacher, sir look at this, I have done this thing and this is for lifetime, ये मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा. This is the way this attitude is required in your studies here. Okay, so next thing what we have discussed that now the name of months, now the name of weeks as well. So what we can do, we just mention MON, that is a Monday here, and what we can do, we just mention and start dragging this particular till Sunday we are mentioning, and the information is going to be displayed on the screen. मेरे बच्चों को मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई. अब जरा एक बात ध्यान से सुनना. On your book, that is on page number 35, one top tip is given. This top tip saying that if you don't want to repeat that information, for example, I'm just going to type here TUE, but what happened here when we just start dragging this one, the next name of the day is going to be appeared on the screen, but I just want that only Tuesday is going to be repeated multiple times. So what we can do, I'm just going to press Ctrl plus Z for undo, or similar kind of thing. If you don't want to use shortcuts, here it is on the bottom of that screen, the things will be there. We are just going to click here and automatically undo is going to be happen. So what we can do, we just move towards that side, hold down the control key. कौन सी की बेटा एक बार chat box में type करिएगा. Which key we just want to hold down if we don't want to repeat that particular names. Control CTRL. अरे वाह ये वाकई कंप्यूटर के स्टूडेंट है भाई. ये जो लोग CTRL लिख देते हैं ना, ये शॉर्टकट में लिखते हैं, it means they are actually belonging to a subject that is a computers. Very good, great. Thank you very much. Thank you. God bless you. Okay, now hopefully this will be clear. I think so. Hopefully these options will be clear here. And now what we are going to do here, kindly concentrate. One very important thing I just want to discuss with you. This is not only eligible with the text only. If you want to type the table of 2, so मुझे एक बार बताइएगा, हम करते हैं ना, हम सब लोग करते हैं 2 × 1 is equal to, चैट बॉक्स में टाइप करिए क्या आता है. 2 × 1 is equal to 2. वेरी गुड. अब मुझे टाइप करना 2 × 2 is very good. I am still waiting. 2 × 2 is 4. बस stop.
Stop typing in the chat box. Now look here. First of all, I'm just going to mention 2 here, and second one we are just going to mention 4 here. Now system is trained. We trained the system that first is 2. After that we are supposed to add 2 values. 2 means 2 plus 2, that is 4 next time. So what we can do, in spite of selecting only one, we can select both the cells and move the pointer toward the bottom edge, and now we can start dragging that particular, and we are just going to release the mouse here. And what happened here, it says that now this is the table of 2 is supposed to be printed here. Similar way, if we are just going to print the table of 9 here, first is 9, second is, I think so, 18. So we have trained the system that first is 9, it starts from a 9, and second value will be 18. How it comes 18? 9 plus 9 is equal to 9 plus 9 is 18. So we can simply drag it towards the downside and it display the number. Similar way, if we are just going to mention it like this, for example, this is a 10. Now here it is, we have mentioned 8 here. So we can select that particular and we can just start dragging here. Now what happened, what it does, only increment is not applicable, decrement is also applicable. Means after 10 there is 8, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, 0, and then there will be a value which is to be represented with a symbol, that is a minus. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई हो, वो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप yes no, or if in case you have any suggestions, you are simply going to type that in a chat box. Very good, very good, very good. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यार ये मैसेज इतने तेज भागते हैं ना, मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। सर व्हाट, एक मिनट, अरे भाई आने ही नहीं देते, क्या करूं। वेरी गुड वेरी गुड, चलो यस ही आ रहा है। अभी एक बच्चे ने कुछ लिखा था, सर प्लीज टेल अगेन, वर्लिन कौर, सर व्हाट विल हैपन इफ वी ड्रैग द सेल मोर देन 7 इन डेज ऑफ वीक। वेरी गुड मेरा बेटा, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस वन, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस वन. Here it is MON. So they repeat the name of that particular day. For example, this is still Sunday. Okay, now we can again drag this. Okay, so now consider this thing that after Monday it begins, it comes to Sunday, and again it repeated the names of week. It begins with Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, and all. This is the way that how the content will be displayed on the screen. मेरे बच्चों को जिनको समझ आ गया, चैट बॉक्स में मत लिखना, आप चैट बॉक्स में मत लिखना, मेरी बात सुन लेना प्लीज, मेरी बात सुन लेना। थम्स अप करो, थम्स अप करो, मैं देखूं कितने लोग एक्टिव हैं। थम्स अप, आई नीड अ थम्स अप। वेरी गुड। अरे 17, 23, 29, 30, 32, 33, वी हैविंग 69 पार्टिसिपेंट्स। सो अभी मेरे को 39 तक मेरे को थम्स अप आया था। वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक। मेरे बेटा कृपया करके ध्यान दीजिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस वन एंड कैन वी जस्ट डिस्प्ले द पीपीटी। यार पीपीटी बनाई है मैंने, वो तो देख लो, तुम सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करते रहते हो कि सर सिर्फ प्रैक्टिकल 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 करा दो। तो जो मैं इतनी मेहनत लगा के पीपीटी बनाता हूँ वो कौन देखेगा, तुम्हें दिखाने के लिए तो बनाई है। ओके वेरी गुड। Now it says on the bottom of page number 35, it says that we having multiple autofill options. So first is copying a cell, second is a fill series, third is fill formatting only, fourth is fill without formatting, fifth is fill days or fill weeks, and sixth is to be called as a flash fill. Sir कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ नाम समझ आए और इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आया, तो यार नाम ही दिखाने थे, समझाऊंगा तो मैं आपको, काहे घबरा रहे हैं। वेरी गुड। नाउ काइंडली कंसीडर दिस थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन हियर जुलाई here, and what I am just going to do here, I am just going to drag this particular. Okay, मैंने ड्रैग कर दिया। अब ये देखो साइड में, ये देखो नीचे जहां मेरा पॉइंटर है यहाँ पे, ये मैंने जैसे ही यहाँ पे आके whenever I am just going to click here, all the options will be display, all the options will be display। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट इज कॉपी सेल, मैंने कॉपी सेल कर दिया। ये देखो अब क्या हुआ, in spite of July, August, September, October, November, December, only first cell is going to be copied to all the cell location, only July। मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, only July is going to be appeared। Now next thing,
if we are going to click on a fill series, so it makes sense. No, not only July is supposed to be repeated, we have to repeat all the different names of the months. So whenever we are just going to click here, so it says, yes, now July, August, September, October, November, and December, and so on, each and everything is going to be displayed. Now, I'm just going to jump towards a fourth option, that fill without formatting. Without formatting make a sense that there is a red color is going to be applied here. So what we can do, fill without. Okay, we can do here, we just apply this particular, okay, and now we are just going to just drag it towards downside. I'm just going to click here and mention fill without formatting. Fill without formatting, kindly consider here. So it means all the colors will be disappear from here. But if we can select fill formatting only, so what we can do, the format is supposed to be display. Format means any kind of font style, any kind of font size, any kind of font color is supposed to be displayed on the screen. अब मेरे बच्चों please मेरी बात ध्यान से सुनना. And here it is. Now, these two is to be considered. This is to be considered as a fill months. Kindly consider this thing. This is saying that this is a fill month here. So what we can do here, we are just going to mention fill months. So all the months will be available here. All the months will be available here. But the last option, which is very effective here. But I just I just give you a demonstration here. No issues with that. No issues with that. I'm just going to give you a practical demonstration for flash fill. अच्छा, एक जने को मैं बोलता हूँ, वो मुझे अपना चैट बॉक्स में ये लिखा हुआ है, मैं बड़ा सा नाम देखता हूँ, हाँ मिल गया मुझे, ये लिखा है अंकित चौबे, अंकित, चलिए जी, एक स्टूडेंट आरव बीर सिंह, मैं आरव का नाम ले रहा हूँ, काइंडली कंसीडर, और फिर मैं अपना नाम लूंगा. मैं लिखा आरव, अगर स्पेलिंग को गलत हो गए माफ कर देगा आरव यार प्लीज. आरव बीर सिंह. अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना. Arav Beer Singh. I just take it as Arav Beer Singh here. I'm just taking it as Arav Beer Singh here. Okay. After that, I've just mentioned it as a Kaval. After that, mention Jeet, and after that, mentioning Singh. One more name. I just take it as Mandeep. मन लिखता हूँ पहले वाले में ना, क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना सभी को, तो सबको उसमें कर लेता हूँ. मनदीप Singh. Now, what is a flash fill? Which how system is powerful here that we are just going to train only once. ये लिखा है आरव, ये लिखा है बीर, ये लिखा है सिंह. अब मैंने इस सेल में टाइप कर दिया रव बीर SINGH. अब मैंने कौन सी की टाइप करनी है, देखो पहले Ctrl+E. चैट बॉक्स में टाइप करो मैंने कौन सी की बोली है, फटाफट बताओ. Ctrl+E चैट बॉक्स पे टाइप करो, चैट बॉक्स में. अरे वाह, तनवीर बने, सबसे पहले तनवीर का मुझे मैसेज आया है. Ctrl+E, वेरी गुड. अब ये देखो क्या होता है, जादू, मैजिक. Whenever we are just going, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, I am not going to do anything else. I am just going to hold down Ctrl+E here, and automatically the system is going to be trained enough that they are just going to combine these different words and make it one. ये क्या करेगा फ्लैश फिल, दोबारा से सुन लीजिए. What I am just going to do here, I am just going to delete this. मैंने सिस्टम को ट्रेंड किया कि तुझे करना क्या है, तुझे ना इन चीजों को, इन सबको कंबाइन करना है. मैंने बोला पहले आरव लिख लेना, फिर वीर लिख लेना, फिर सिंह लिख लेना. कहता ठीक है. अब सिस्टम ट्रेंड हो गया. अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट सेल पे क्लिक किया, and I am just going to press Ctrl+E. Automatically what happen, all the other options, all the other details is going to be combined as per this particular this particular content which we have trained to the system. जिसकी हमने ट्रेनिंग दिया सिस्टम को, और हमने की कौन सी प्रेस की थी, that is to be considered as a Ctrl+E. that is to be considered as a Ctrl+E. हमने Ctrl+E जो है वो हम लोगों ने वहां पे जो है प्रेस की थी. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई है वो यस कर दे या नो कर दे. अच्छा Mantaj, I think so my voice is louder enough, I think so, but I think so there is a kind of
internet issue at your end. If my voice is low, if my voice is low, then there is a kind of internet issue at your end. Opening from writing, sir, we are opening for writing months. सर ये मेरे को समझ नहीं आया, मेरी बच्चे ने पूछा, अनुरीत कौर ने, अनुरीत आई एम नॉट गोइंग टू, सर इट इज क्लियर। अरे वाह चिन्मय जी, थैंक यू वेरी मच। कंट्रोल प्लस ई, ओके आई कैन कनेक्ट ईयरफोन। अरे वाह सर क्या बात है। तनवीर सर योर वॉइस इज क्लियर, थैंक यू तनवीर, गॉड ब्लेस यू। ओके now kindly concentrate, we have reached till page number 36, and on page number 36 one topic is mentioned on the middle of the page. Can you please type in a chat box if you having books with you, and in that way I comes to know that how many students having books with them. I just come to know that how many students having books with them. Very good, very good, very good, very good, very good. अरे वाह क्या बात है, सच में है सबके पास। वेरी गुड, यस। तो मुस्कान, आई हैव बुक तो ठीक है बेटा, बट टाइप द नेम ऑफ द टॉपिक which is represented with a blue color on page number 36 on the middle of your page. कुछ लोगों ने टाइप कर दिया है कस्टम लिस्ट, मृदुल गर्गा जी। अरे वाह गर्गा साहब, हम मुस्कुराइएगा मत, देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बंदा बहुत अच्छा हूँ, मैं क्यों कहूँ मैं खराब हूँ। वेरी गुड, अब कस्टम लिस्ट देखिए। Now you are just assuming this thing that this is a magic, that we have only entered that first name of week, for example, a Sunday, and all the others name is supposed to be appeared. So is there is any magic here? No, never. There is nothing magic like, but we have trained a system in such a way, so what we need, they are just going to display the same thing on the screen. So how we can do that? Please kindly concentrate. First of all, I just want to display PPT here because PPT is important here. So this is a custom list, and we are just distributing this custom list into two different ways. Kindly concentrate. By importing a list, abhi sab kuch pata lag jayega, chinta mat karna. By importing a list of items, okay, great. Second, it says by typing the list in the custom list. Ab do method ho gaye. One is importing, and second is to be called as a typing. So what we can do, we just move backward here, and we can just open the Excel sheet. Okay, great. Sir, what we are going to do here? Okay, first of all we are just begin with importing. कहता सर बिल्कुल सही है, importing कर लो, क्या दिक्कत है उसके अंदर। कहता ठीक है सर, उसके लिए क्या करूं सर। कहता जो मर्जी कर लो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं अपने फ्रेंड्स के नाम लिख रहा हूँ, अब वो ऑटोमेटिकली आएंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखना फ्रेंड्स के भी लिखूं, अपने बच्चों के लिख लेता हूँ। जिसका नाम याद ना है वो गुस्सा मत हो ना। अमन, मनदीप, साहिल, अब ये मेरे को यार थोड़े से नाम याद थे, उसको लिख के जतिन, देव, गुरप्रीत है ना, अब सब लिख दिया। व्हाट वी कैन डू हियर, व्हाट वी कैन डू, we just select that particular option. Wait, Divyanshi, kindly wait for a while. We just select this particular option, and I have just clicked on the file option. File, I'm just going to click here on a file, and after that, my dear respected student, I am just going to click on the options here. I'm just going to click on the options here. The list of options is going to be appeared on the screen, and after that what we can do, we just click on the advanced option, advanced, and now we can simply drag it towards the downside on the bottom side, and here it is, we found the option which is to be called as a added custom list. So what we can do, we just click on that option, and here it is, one option will be there which says import. मेरे बच्चों कौन सी option है, import. I'm just going to click here, import, and now look here, all the names will be available here, and for adding these names, what I am going to do, I am just going to click on a OK here, and again here it is a OK. So what we can do here, we just delete that, and we don't remember anything else here. So what we can do, we just mention Dev. I just mentioned the name of Dev, and now I'm just start dragging the names here. Automatically the list of names is going to be appeared on
द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी लिस्ट जो है अवेलेबल हो जाएगी। जितने लोगों को मेरी बात समझ आई हो वो है यस और नो में आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। I'm waiting. I'm waiting in a chat box. Tanveer is saying no. Okay, Tanveer, I'm just going to repeat this thing. Otherwise, else all saying yes. Tanveer, I'm repeating, beta. No problem with that. Okay, sir, please repeat. Suhani Dhingra ji. Yes, Suhani, why not? Sir, please explain again. Anvi ji. Anvi, yes, why not? Okay, Anvi, Suhani and Tanveer. I'm just going to delete this one. This time, what I'm going to do, I'm just going to type the name of cities. For example, Jalandhar, Fagawada, Ludhiana, Patiala, Patiala, Sanagarura, Sangarur. ये मैंने टाइप कर दिया। ओके, व्हाट वी कैन डू हियर नाउ। अच्छा, मैंने चैट बॉक्स भी ओपन किया हुआ है। अब मुझे एक बार जिन लोगों को बोल रहे थे जो कि हमें सर यस हमें पता लग गया है, वो मुझे टाइप करते जाइएगा चैट बॉक्स में कि अब मैंने कौन से स्टेप पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग दिस। अब किस पे क्लिक करूं बताओ मुझे। फाइल। अदिति दुबे जी इज सेइंग फाइल। थैंक यू अदिति, सहज, तनविंदर, जशन, वेरी गुड। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन। अब स्क्रीन पे देखो ना, अब फाइल मत टाइप करते जाइएगा। यू कैन टेल मी द नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच वी आर गोइंग टू क्लिक नाउ। वेरी गुड। अब किस पे क्लिक करूं? ऑप्शंस। अरे वाह क्या बात है यार, ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया। ओके, नाउ जस्ट टेल मी नाउ व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू हियर। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रैग इट टुवर्ड्स द डाउन, नो नो नो, एडवांस। यस, वेरी गुड, थैंक यू। And now I'm just going to drag it towards the downside and which option type कीजिए, टाइप करिए चैट बॉक्स में which option is required. वेरी गुड, मैं अभी नाम लूंगा जिसने फर्स्ट टाइप किया। अरे कस्टम लिस्ट, एंजल सहदेव जी, वेरी गुड। एंजल, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मेरे पास ऑप्शन आ गई। अब किस ऑप्शन पे क्लिक करूं? सब लोग बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, रंजीता सिंह, very good. I'm just going to click on an import here, and now we are just going to click on one more option. Kindly just tell me which option we are supposed to click on. That is okay, and again okay, very good. Now I'm just going to delete this one. I'm just going to delete this one. So what we can do, I'm just going to simply type it Fagwada, and I am just going to drag it towards the downside. All the names of the cities is going to be available on the screen. मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? Yes or no? एक बार टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में yes or no, yes or no, yes or no, yes or no. अरे वाह क्या बात है, अब सब लोग yes कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, thumbs up, great, great. Okay, now my dear respected student, one more thing. Okay. I'm just going to delete this. I'm just going to delete this, and in spite of importing the information from Excel sheet, now the next option will be, that is on page number 37 on the bottom of your page. Kindly concentrate. Second option, where we are supposed to type a new list. So what we can do for the same, my dear respected students, the same option will be followed here. File, there is a option, and there is advanced, and now what we can do here, we are just going to drag it towards the downside at edit custom list. Click here directly. Now we are going to type here. What we can type here, we just type 1, but remember this is very, very important. In point number 1, last line, it's mentioned here that press enter after each item. So what we can do, enter out. Okay, 2, enter, THREE, enter, FOUR, enter, 5. I'm just going to type till 5 only. Okay, and now what we can do here, we are just simply going to click on the this option. Okay, add, we have done add. We are supposed to click on the add, and the list will be appearing here on that particular, and now we can do what we can do, we simply click on the option that is okay. हम दोबारा रिपीट करेंगे, घबराइएगा मत, चिंता मत करिएगा। So what we can do here now, what we are going to do here, we are just going to type here THREE 3. I'm not typing 1 here, I'm just typing 3 here, and now I'm just going to start dragging this one, and automatically the options will be appearing on the screen that this list is being created. जो लोग जिनको समझ आ गया वो yes कर दीजिए, जो चाहते हैं कि दोबारा रिपीट करना है वो एक बार मुझे बता दीजिए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग टू
if you need that this is to be repeated, then only I am repeating. Otherwise, I think so there is no need to repeat. Yes, all are saying yes. Repeat. Okay, one student is saying repeat. Okay. No repeat. Repeat. Okay. Great. ठीक है. Monica Bansal ji is saying that repeat, sir. Okay, no problem, Monica. What I am going to do here? Kindly concentrate. Please kindly concentrate. I am just deleting this one. In a chat box, please type here. So what we have on which option we are supposed to click first of all. Just tell me in a chat box. Yes, yeah, very good, great. I got it, Verleen. Thank you. That is first is file. Second option. Second option. Okay, very fast, very fast. And then there is advanced. Oh, great. It's looking great. So after that, what we can do? Edit custom list here, and here it is. What we can do? We just type something here. For example, I'm typing SSDPS. Okay. KNPS कैम्ब्रिज के लिए कैंप कर देता हूँ, KVS कर देता हूँ, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स जो हैं KVS कर देता हूँ, DPS कर देता हूँ, सेंट सोल्जर कर देता हूँ. इस तरीके से मैंने टाइप किया. ठीक है. एंड नाउ वी कैन सिंपली क्लिक ऑन द ऑप्शन दैट इज ऐड. द लिस्ट विल बी अवेलेबल हियर. लिस्ट विल बी अवेलेबल हियर. And what we can do, we simply click on the OK and again click on OK. Now, for example, we are supposed to type here KNPS only. So what happened here when we are begin with dragging that particular, all the different options what we have typed on that particular custom list is being appeared on the screen. अच्छा, आप मुझे yes or no में answer दे दीजिए. Please, it's my humble request. Kindly give me your answer. Yes, whether it is in the form of yes, whether no, or in case of any suggestion. Very good, great. मजा आ गया. Very good. अच्छा, एक चीज बस लास्ट में आप बता रहा हूँ, that is on page number 38. Please जरा ध्यान से देखिएगा. Last topic ही है मुझे लग रहा है. So if you want to delete a particular list, what we can do? File. We can click on option. We can click on advanced. We can simply drag it towards the bottom and edit. And we can simply select this one. Select and click on the delete option, and it says list will be permanently deleted. We have to simply click on the OK. अब फिर देखिए दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, because some students are saying, sir, can you please repeat it again? So what we can do? File. We can simply click on options here. We can click on the advanced option here. We just simply drag it towards the bottom of that particular screen. Edit custom list, click here on that particular part here, and we can simply click on the delete. It says list will be permanently deleted, and I am just going to click on the option that is to be considered as a OK. मैंने जैसे इसको कर दिया, जैसे इसको किया और OK पे क्लिक किया, the list will be deleted. जहां तक मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आ गई, yes no में आंसर कर दीजिए प्लीज. यस नो में आंसर कर दीजिए. अरे वाह, आनंद आ गया, आनंद. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. ये मेरी 7th क्लास ना मुझे मेरी फेवरेट है. वैसे आपको बताऊं, गुस्सा मत करिएगा मेरी बात का, ये यार मेरे को ना सारी क्लासेस ही मेरी फेवरेट है. कहीं आप, अच्छा ये देखो, अब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने, अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया है. ठीक है, तो अभी फिल कर दीजिएगा. थोड़ी देर के बाद हम डिलीट कर देंगे वहां से. आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. ओके, वी कैन जस्ट गो थ्रू विद वन मोर ऑप्शन. बी क्विक. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर हाउ टू टेम्परेरी डिलीट. Angel, there is no option for temporary deletion. That's why it says that the list will be deleted permanently. So if you are looking forward for a temporary deletion, so better you are not going to delete that option. I think so. नेक्स्ट ऑप्शन. अरे वाह, तनवीर मेरा बड़ा एक्टिव है यार. उसने पहले लिख दिया फिल, पर लिखा थोड़ा है, शॉर्ट लिखा है. आंसर उसका था फ्लैश फिल. ये लिखता ही ऐसे है, पता नहीं इसको क्या हो गया. ये शॉर्ट में लिखना इसको अच्छा लगता है. चलो, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे चढ़ता हूँ. अब ये देखो, ये हमने कर लिया, एडिट और डिलीट अ कस्टम लिस्ट. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लैश फिल. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, बट वी आर रिपीटिंग हियर अगेन. नो इश्यूज विद दैट. Flash fill recognize the data filled pattern in a worksheet and fill the remaining series accordingly. ये last name, ये first name, ये middle name, ये full name. अच्छा, कुछ भी ले सकते हैं. मैं अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज. I have mentioned this particular, मैंने यहाँ पे मेंशन किया. अब मैंने यहाँ लिखा सिंह, तनवीर,
मैं वैसे ही लिख रहा हूँ तनवीर जीत। अब मैंने फुल नेम इसका नहीं लिखना अभी, अब मैंने लिखा जैन, अब मैंने लिखा अमित, अब मैंने लिखा कुमार, अब मैंने यहाँ पे लिखा भूपता, साहिल, और मैंने लिखा कुमार। अब मैंने लिखा यहाँ पे मानदीप, नहीं लास्ट टाइम में मदीप थोड़ी लिखना है मैंने, सिंह SINGH, मानदीपा, बाजवा, बाजवा। अब देखो जरा एक और लिख लेता हूँ, एक और लिख लेता हूँ। मैंने लिखा चावला और जीवन ज्योति, जीवन ज्योति। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसको ट्रेन किया। आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रेन इट ओनली वंस हियर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन तनवीर जीत सिंह, तनवीर जीत सिंह. Now what we can do, can anybody tell me that which key we are supposed to press for the same? Can anybody tell me in a chat box which key is required? अरे वाह, रंजीता सबसे पहले वाले का नाम पक्का लूंगा। रंजीता is saying control plus E. अब ये देखो, I am just going to hit control plus E and all the required option, all the options will be filled automatically. In spite we are typing it again and again, everything is going to be appeared on the screen only once when we have just press the key that is to be considered as a control plus E. मेरे बच्चों को मेरी बात जिनको समझ आ गई हो वो कृपया करके मुझे यस और नो में आंसर कर दे चैट बॉक्स में। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। आप ये मत सोच रही कि हम वेट नहीं कर रहे, हम वेट कर रहे हैं सर आपकी। वेरी गुड, यहाँ तक सबको समझ आ गया, वेरी गुड, ग्रेट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। यार जब तक टाइम है भूल ही जाना, चुप नहीं, चिंता मत करो, मैं चुप नहीं करता होता। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग? Sorting means we are going to arrange something in a particular order, whether it is ascending, that is A to Z, or it is descending, that is Z to A. So this is to be considered as a sorting. We can, it says sorting means rearranging of data which may be textual. Textual का मतलब होगा is the combination of alphabets. These are the combinations of alphabets. Alphabets जो हैं उनको हम textual बोला करते हैं। Numerical, numerical. It makes sense that numerical means it says that this is the combination of what? This is the combination of numbers. And next it says that this is to be considered as the combination of alpha. These are the combination of two different words, that it says alpha and numeric. It says alpha represents